Dear all, it's a joy again to be able to connect with you. In the last few lectures, we have talked about the kind of qualities that need to be possessed by a good interviewee when somebody is going for an interview in SSBs. आज एक और क्वालिटी का जिक्र करते हैं, and this fifth quality happens to be knowledge. And its practical application. इंटरव्यूअर्स उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर आप उन्हें बता सकें कि किस एरिया के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है और उसको आप अगर सब्सटैंशिएट करवा पाएं, उसके बारे में आप सारांश के तरीके से कम शब्दों के अंदर आप सारगर्भित बात बता पाएं. जैसे देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, एक्चुअली he was very good in sports and he was a voracious reader also. ये दोनों हमें दो तरफ की बातें लगती हैं, पर वो खेलों में भी बहुत अच्छे थे, वो सारे ही गेम्स खेल लेते थे. He was a very good player of cricket, of football, of table tennis, badminton, chess, powerlifting, weight training, arm wrestling. He was very good in almost all of these. और अगर हम जिक्र करें तो दूसरी ओर he happened to be a voracious reader. उनसे उनका जब इंटरव्यू आया इलाहाबाद के अंदर तो उनसे पूछा गया that I can see from your PIQ form that your hobby happens to be extra reading. When you were traveling from Delhi to Allahabad, what was the book that you were reading? और मुझे उस मित्र के बारे में पता है, शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब उन्होंने कुछ ना कुछ नया नहीं पढ़ा. और जेन्युइनली जब वो रात को ट्रैवल करने लग रहे थे तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में छोटी लाइट ऑन करके वो अपनी एक किताब को पढ़ने ही लग रहे थे. उन्होंने उसी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद आई वाज गोइंग थ्रू द मास्टर वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी. ज्ञान की बात बताई. इंटरव्यूअर ने कहा, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक? एंड दिस जेंटलमैन ही सेड, माय फ्रेंड, ही सेड दैट सर, one old fisherman pitted against the forces of the sea, the forces of the nature, and it is such a beautiful and a heroic struggle how a very big fish drags this fisherman out in the sea for 2 days. Finally he catches that fish, he comes back, and on the way he is attacked by sharks, and this big fish, the flesh of this big fish is eaten by the other sharks. और ये वापस आता है, लड़ता है, बेहोश होता है, but he fights and he comes back. He is not defeated, he is still a victorious old man, because that has been the biggest fish that has ever been caught by a fisherman in that particular locality. अब ज्ञान का तो पता होना चाहिए, उस ज्ञान के साथ उस ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और सारांश आपको पक्का पता होना चाहिए. If somebody says I am good at mathematics, the interviewer is definitely going to say the room in which we are sitting, what happens to be the volume of this particular room. प्रैक्टिकली पता होना कि लगभग कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी. This is the practical application. There is a possibility somebody says I am good at chemistry and the interviewer says, what do you think is the volume of water in the glass which is there in front of me? अब एक ग्लास के अंदर 180 ml, 200 ml, 220 ml के आसपास होता है. बट प्रैक्टिकली अगर हम इन बातों को रिलेट कर सकते हैं, then you find a beautiful connect with the heart and the mind of the interviewer. So I think that each one of us needs to know that if we are to be able to make our presence in the hearts of the interviewer, then we need to be knowledgeable. There is no substitute for knowledge, and at the same time we need to be aware about its practical implementation. Thank you ever so much.